guys, welcome back to our channel Mo and Ash Vibes. We are back with another important update from Canadian immigration. So if you are a tech professional who wants to immigrate to Canada, or if you're a tech professional who's already in Canada and want to get the permanent residency sorted, keep watching this video till the end. Before we move along, if you haven't subscribed to the channel, please hit the subscribe button and like this video. Great news guys, Alberta has launched a new fast-track PNP program. This program will be beneficial for people who are from the tech background. The PNP program was announced on 13th of January by the Alberta's immigration minister. So let's talk about what is this program all about. Under this program, tech professionals say they can get their Canadian permanent residency in less than 6 months if they have a valid job offer in demand tech industry. Before we get into the nitty-gritty and the technicalities of the PNP program, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्बर्टा प्रोविंस में जो टेक फील्ड है या टेक इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है एंड वही उसका रीजन है कि नया जो पीएनपी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू सफाइस दैट बेसिकली। काफी हम देखते आ रहे हैं पिछले साल और उससे भी पिछले साल से कि जितने भी टेक इंडस्ट्री या टेक कंपनीज जो अल्बर्टा में है, कैलगरी, एडमिंटन, कहीं पर भी दे आर रीपिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, बट उनके पास शॉर्टेज है लेबर का, शॉर्टेज है स्किल्ड लोगों का, स्किल्ड टैलेंटेड लोगों का जो इस फील्ड को बिलोंग करते हैं। हम नंबर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कमर्शियल रियल एस्टेट फर्म CBRE, Calgary has seen its ranks of tech workers grown by 17.9% between 2015 to 2020, which means an increase of 46,700 workers. Also, according to Alberta Enterprise Corporation findings of 2021, Alberta Technology Deal Flow Study states that Alberta is now home to more than 3,000 tech companies, which is a 233% increase since 2012. According to Newswire Canada, 38% of tech companies have shown profitability of more than 1 million in the last fiscal year. All those things tells us what? कि टेक ग्रोथ, टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी सॉलिड हो रही है अल्बर्टा प्रोविंस में एंड दैट इज व्हाई एक नया पीएनपी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कैनेडियन इमिग्रेशन के द्वारा। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एक्सेलरेटेड पीएनपी टेक पाथवे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है दैट यू गाइज नीड टू बी एलिजिबल फॉर अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, और उसके बाद आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल में, जहाँ पे आप वन ऑफ द 3 कैटेगरीज में एलिजिबल होने चाहिए। या तो आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास होना चाहिए, या फेडरल स्किल्ड वर्कर आप होने चाहिए, या फिर फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। सो इन एनी वन ऑफ दीज 3 कैटेगरीज यू शुड बी एलिजिबल। के बाद आप एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे फॉर योर अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। Through that form, you will send the information about your express entry pool and also about the tech job that you have in Alberta. Most important point here is that in order to be eligible for this program, you definitely need to have a job offer in the Alberta based company, या फिर आप already यहाँ पे काम कर रहे होने चाहिए। So basically job offer, job is the most important factor here. There are 23 eligible occupations that are listed below the National Occupation Classification codes, जिनको हम NOC codes भी बोलते हैं। I'm not going to go through all of them, but quickly आप अपनी screens पे देख सकते हैं कि senior managers, human resource managers, telecommunication career managers, engineering managers, professional occupation in advertising, marketing and public relations, human resource professionals, civil engineers, mechanical engineers, electrical and electronics engineers, web designers, developers, drafting technologists, technicians, user support technicians, producers, directors, electricians, industrial electricians, telecommunication installation and repair workers, business development officers and market researchers, etc. In the next step, ANP will check your eligibility, and if you are eligible, they will be sending you an invitation to apply, and they will be sending it via an email. आप without invitation इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं, so please keep that in mind that you would require an invitation from AINP for this process to proceed. Once you receive the email invitation from Alberta, you check कि आपकी सारे जो requirements है वो fulfill हो रही है कि नहीं। उसके बाद जो है आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे। ऑल द कंप्लीटेड एप्लीकेशंस गोज इनटू द पूल ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशंस। उसके बाद AINP सारी एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगे एंड दे विल डिसाइड कि उनको किनको सिलेक्ट करना है। द नेक्स्ट स्टेप, इफ अल्बर्टा सेंड्स यू द नॉमिनेशन, आपके पास 30 डेज है अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल से उसे एक्सेप्ट करने के लिए। एंड अब जब आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो चुका है, यू विल गेट एडिशनल 600 पॉइंट्स जो आपके CRS स्कोर में ऐड हो जाएंगे। कीप इन माइंड, जब आपके ये 600 पॉइंट्स आपके CRS में ऐड हो जाएंगे,
इट डज नॉट मीन दैट इट्स गारंटिंग यू द PR राइट अवे, बट इट ब्रिंग्स यू काफी क्लोज उस एक्सप्रेस एंट्री पूल में। आपके चांसेस काफी इंप्रूव हो जाएंगे, काफी ज्यादा हो जाएंगे उन पॉइंट्स के साथ। अब इस प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकलेगा, और अगर आप उस एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में सिलेक्ट हो जाते हैं देन IRCC विल सेंड यू एन इन्विटेशन टू अप्लाई, and if they send you the invitation to apply you can apply for your permanent residence. This is a great news for every tech professional. आप अगर टेक बैकग्राउंड से हैं और अगर आप कनाडा में किसी टेक फर्म के लिए काम कर रहे हैं या ओवरसीज हैं लेकिन आपके पास एल्बर्टा का वैलिड जॉब ऑफर है विच इज द मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस प्रोग्राम, दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। इवन कि यहाँ के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बोला है कि जिनके पास वैलिड जॉब ऑफर होगा एल्बर्टा का उनको PR 6 महीने से भी कम में मिलने के चांसेस हैं। एज मेंशन्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो एज वेल, एल्बर्टा काफी बूम कर रहा है। उसकी जो दो बिगेस्ट सिटीज हैं कैलगरी एंड एडमिंटन, उनमें भी काफी ज्यादा राइज है। ओवरऑल ट्रेंड्स में भी people are moving from Toronto and Vancouver जैसी सिटीज से to now Calgary. So if you want to know more about it, हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जो कि डिफरेंशिएट करती है कि कैलगरी चूज करें या एडमिंटन चूज करें। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, उससे आपको पता चलेगा कि मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों सिटीज के। यू कैन चेक दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन एंड विल ऑल्सो बी पोस्टिंग द लिंक फॉर दैट वीडियो इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ये थी लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट रिगार्डिंग द PNP प्रोग्राम ऑफ एल्बर्टा। वी होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Until next time, ta-da!